So now you have distance time graph, right? So what is a distance time graph? If you have time on your x-axis, if you have distance on your y-axis, ठीक है? This is called a distance time graph, ठीक है? So an object moving with constant speed covers equal distance in equal time. For example, you can see over here, right? So you have distance which is measured in meters on y-axis. You have time measured in seconds in x-axis, and you can see that हर second apart, it is traveling 10 meters, right? Plus 10. Now in the next second, next 10, next one, next second, it covers again more 10 meters. So it became 20, right? Again in next second, which is at 3 seconds, it has traveled 30 meters. That is additional plus 10 meters, right? Again, it has traveled plus 10 meters. So at every second, it is covering what? Uniform 10 meters. So this is called a uniform graph, right? So यहाँ पे अब how would you elaborate and how would you explain the graphs? Similarly, जो हमने जैसे इसको किया हमने स्पीड टाइम को किया हमने किया अभी एनालाइज किया। हमने पहले इसको बताया कि सिनेरियो क्या शो कर रहा है ग्राफ, एंड देन इसका स्लोप की प्रॉपर्टी क्या है, इसका स्लोप क्या देगा हमें? एनीवन टेल मी व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? इफ आई जस्ट लेट्स से मैं इसका स्लोप निकाला, ठीक है, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, एंड इस पे यहाँ पे वाई पे वी हैव डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो चेंज इन सॉरी डिस्टेंस, एंड एक्स पे वी हैव टाइम. So what is this quantity representing? That's pretty simple to answer. What is distance upon time? Speed तो equals मुश्किल तो नहीं था. distance. या ठीक है, स्पीड, ठीक है. तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव यू स्पीड, राइट? सो यहाँ पे इसका स्लोप विल कम आउट टू बी कांस्टेंट, राइट? सिंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, राइट? अगर आप लेट्स से यू हैव पॉइंट ए, यू हैव पॉइंट बी, you have point C, you have point D. Let's say if I take a point AB and find out the slope, and if I take point AC, if I find out the slope, if I take point B and D, if I find out the slope again, सबसे आंसर मेरे पास सेम आएगा. That is meaning, that is stating के the slope, the gradient of the straight line is constant. ठीक है? So this will come out to be constant. ठीक है? That is why she is stating के it moves with constant speed, right? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे. तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ LM अपॉन OL इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो लो ने स्लोप आपको निकाल के बता दिया है. तो स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है? सो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम बाय रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस इज द मेन थिंग व्हिच आई वांट टू शो ओवर हियर, ठीक है? लेट मी जस्ट ट्राई टू नाउ briefly summarize what we have discussed today, ताकि you can make notes. So we had discussed two graphs, right? We had discussed speed time graphs, and we have slightly touched distance time graph, right? And let me just draw a small sketch. ठीक है जी. इसमें हम सर तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस ढूंढना तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा ना. जबरदस्त. Yeah, that is after the distance time graphs, ठीक है? That you are going towards the right track. That is why I wanted to build in you guys कि हर चीज फॉर्मूले से लिंक हुई है, ठीक है? तो ये ग्राफ भी आप जो पढ़ रहे हो, इट्स डायरेक्टली मेकिंग यूज द फॉर्मूला, राइट? सो if you have speed time graph, you use एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला, राइट? दैट इज आप स्लोप निकाल लें, दैट इज इक्वल टू v माइनस y by t, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन. सो ये फॉर्मूले ऐसे डिराइव हुए हैं कि दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल they have been tested experimentally, and then they have were proven using mathematics, then the formula derive हुआ. So the formula now works perfectly fine, ठीक है? ग्राफ ज्यादा आपको आसानी, if you want to explain the huge entire motion, you can just directly draw one graph instead of writing and proving all the formulas or writing in words के first of all at this time I went at this speed,
then I travel this many distances at this speed. So just draw a graph, right? You should be able to understand what is this graph showing, right? That is good. समझा? तो अच्छा जी, हमने डिस्कस किया कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द ग्रेडियंट ऑफ दिस, gradient of velocity speed time graph gives you acceleration, right? And ठीक है, we have studied types. How many types do we have? We have the constant speed time graph, right? We have seen a uniform speed time graph. We have seen a non-uniform speed time graph, and we have seen the combined versions. ठीक है जी? यहाँ पे जो हमने अभी स्टार्ट किया है, we have नो कि gradient of this graph, gradient of distance time graph gives you speed, right? And just remember the formula, right? Formula is याद रखो हमेशा. Acceleration is change in velocity divided by change in time, and your speed is distance upon time, right? And the second thing, when I discuss the types in the next class, inshallah, that is to be discussed, right? TBD. That is going to be the following. ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ the slides. We will see these different scenarios at rest, constant speed at rest, and constant speed, and non-uniform speeds over here. ठीक है, and then you're gonna learn how to track back. जो अभी हमने कहा कि सर अगर हम इसका एरिया निकालने, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? जो if you have a rectangle, if you multiply length to breadth, you get area, right? So वही अगर हम करें तो can we gonna have this thing, right? That is a good takeaway, right? So I will explain the example. Then you're gonna solve this example in the class, and then we're gonna derive these equations. They're pretty simple to derive. And then again, I'm gonna test you guys to solve this question. ठीक है? Then it is some general discussion over here. So सारी mathematics यहाँ तक खत्म हो जाएगी. उसके बाद we have some storytelling over here. ठीक है? कि free falling bodies कैसे लोगों ने proof की थी कि acceleration of gravity is constant on every object, right? Galileo Galilei की story है. Yeah, he was the person. Galileo Galilei was the person who proved कि अच्छा before telescopes were invented, before we had cameras, before we had any satellite, so people used to think, okay, let's give you a hint for the future discussion. ये तो हम करेंगे types, we will discuss it out again in the future. Let me give you a taste for the next class कि हम क्या करेंगे discuss in the next class, that is following. So let's start with discussing different types of distance time graphs. ठीक है, उसके बाद we will learn how to backtrack. ठीक है, and then I have some test question for you guys. Then we're discuss define and derive some equation of motion. ठीक है, and then so on and so कुछ discussion होगा acceleration पे. ठीक है, some homework over here. So let's start it out, right? So I believe that you have calculators, you have pen or a pencil and a copy. ठीक है, you should be making notes with me. Let's say if I'm saying something जो मैं लिख नहीं रहा, you should make notes of that, right? अच्छा जी. So let's start and discuss different types of distance time graphic. ठीक है. So let me choose a color, draw, and let me choose a red color because it's pretty obvious. So we had different sections over here again. ठीक है? So it's a combined scenario, different distance time graph scenarios. इसको हमने combine किया हुआ है. So let me just define the sections, right? So different sections जो available हैं यहाँ पे. By sections I mean के we have OA and we have AB. इसमें हमारे पास distance time graph का pattern change हो रहा है. Then we have BC, which is similar to section OA. And then we have CD, right? Imagine कि you have a car
राइट, इमेजिन यू हैव अ कार, राइट, एंड उसका मैंने अंदर सेंसर लगाया हुआ है, सेंसर से डेटा मैंने पिक करके प्लॉट कर दिया, राइट। सेंसर गिव मी के डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ओ, एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स, लेट्स से एट पॉइंट ए मैंने डिस्टेंस नोट नोट करते करते मैं सारे यहाँ प्लॉट कर दिए। देन एट पॉइंट बी मैंने सारे डिस्टेंस प्लॉट कर दिए ग्राफ के ऊपर एज टाइम चेंज, राइट। सो दिस इज सम सेंसर डेटा विच आई हैव रिसीव्ड, एंड उसको मैंने प्लॉट कर दिया, राइट। आई वांट टू एनालाइज इट, राइट, आई वांट टू एनालाइज इट कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। सो आई हैव the first section that is OA. I have the second section which is AB. I have the third section which is BC. I have the fourth section that is CD. Right? So अब ये sections को हमने discuss करना है डिटेल की गाड़ी के साथ. Let's imagine you're sitting in the car and what is actually happening over there, right? So if you want to hop in and discuss and answer the questions you may. ठीक है. If you have any questions, please speak up or raise your hand, right? Because मैं chat को देख नहीं रहा था. So let's start with section O. ठीक है, I'm going to duplicate the graph ताकि you know कि what is which graph are you talking about over. ठीक है, so ये मैंने ग्राफ को डुप्लीकेट करके मैंने प्लेस कर दिया. ओके, ये थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है. So yeah, it's perfect over here. So let's discuss over here what is happening, right? So यहाँ पे what is happening कि the distance is not changing, right? So it was at point O and मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया T0, राइट. टाइमर स्टार्ट कर दिया एंड आफ्टर इट रीच पॉइंट ए, ठीक है, still it is at the same point, right? So what is happening over here? What is the scenario which you can explain from the graph? Okay, there is no change in distance, right? मतलब from the reference point, from the starting point, the car hasn't moved yet, right? Car is not moving, ठीक है. So we can say therefore the car is at rest. If I talk about the slope, right? What is the slope? If you just take a graph, any graph, this is x-axis, this is y-axis, and let's say this is a line, right? So what is the slope I'm talking about? Slope आप इसका निकालते हैं basically from this formula, that is change in y upon change in x. In this scenario, I have distance on y and time on x-axis. So the slope is basically distance upon time, right? So what is distance upon time? That is equivalent to what? Speed, right? So since the slope is का constant है, ठीक है, the change in y is zero, right? The change in y, that is the distance, the change in distance is zero. Therefore, from the formula, the slope is equals to change in distance divided by change in time is equals to 0 upon change in time, right? So 0 over anything is basically 0 meter per second. The speed of the car is 0 meter per second. That supports our answer. Okay, the car is at rest. ठीक है, so that's how you answer questions. You want to also use formulas in your analysis, right? कि आपने बता दिया कि इसका slope is giving a speed. Since the slope is coming out to zero, the speed is zero. ठीक है, देखो जो आपने बताया है कि car is at rest, it proves that fact, right? So that's how you should be answering in the exam or in my test also. Now let me insert another slide, a blank slide over here. ठीक है, let me duplicate this graph. Now we're talking about the section which is AB, right? तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन AB के बाद. So कोई बताएगा मेरे को what is happening in section AB just from the method which we The have. car is moving at a constant speed Okay, and its distance increase हो रहा है. ठीक है. So why, how can you prove the car is moving at constant speed, Hamza? क्योंकि इसमें ग्रेडियंट भी नहीं, क्या कह सकते हैं, ये स्लोप जा ऊपर हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. Good. So the car is कैसे moving, करना है? perfect. The car is moving with constant speed, right? पर मैं तो ऐसे एक्सप्लेन करना होता है क्या? हाँ, आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, जब व्हेन यू वांट टू बेसिकली आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद दे आस्क थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट? देयर माइट बी क्वेश्चन आपको ग्राफ दे दें एंड यू वांट टू एनालाइज द एंटायर ग्राफ,
राइट, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एक्सप्लेन कि अभी जो सिनेरियो दिया हुआ है, which scenario is this? Is the constant speed? Is the constant velocity? Is the constant acceleration? Is the car at rest? ठीक है, so you want to analyze the graph. If you don't know what is happening and how do we read and how do we understand the graphs, then you won't be able to answer. ठीक है, ठीक है। the car is at rest. ठीक है, and why the car is moving with constant speed? Why is that? Because equal distance changes in equal interval of time. अच्छा, what do I mean by that? Let's say I make किलर a table. टाइम। हाँ, डिस्टेंस का टेबल और टाइम का टेबल बनाया मैंने। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, लेट्स से इस पॉइंट पे इट वाज एट 5 meters। ठीक है, एंड दिस वाज 3 seconds, राइट। लेट्स से एट द नेक्स्ट सेकंड it traveled, let's say 7 meters, right? Let's say at the next second it traveled 9 meters, right? Let's say ये point B आ गया। So at every instant, at every increment of time, it traveled +2 meters, right? So her equal interval of time पे it was increasing the distance by 2. So that is why it has a constant slope, right? Then you just want to support by your mathematical equation that slope is equals to change in distance upon change in time. That is equivalent to speed. ठीक है, since the slope is constant, therefore your speed of the car is constant. I hope it makes sense, right? ईशल समझ आया को? ईशल, जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। कैन यू स्पीक अप? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही हेलो, आवाज आ रही है। है? Yes, I can hear you right now. यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड। Okay, ठीक है, good. So now you can see कि section BC is same as section OA, right? दोनों रेस्ट वाले सिनेरियो हैं, and section AB is same as section CD. So दोनों पे you can apply the same analysis, right? So if I just write down my last statement, ठीक है, I'm going to copy this and blank slide. I'm going to and copy the graph over here, not this one, this one. Oh, Control C and then move on to the blank slide. So I can write it down over here. Okay, section OA is equivalent to section BC. मतलब जो भी इसका एनालिसिस है, it's going to be same. जो आपने OA के लिए लिखा है, that is going to be exactly same for BC. And for section A भी जो आपने एनालाइज किया है, is going to be same as section C, right? The analysis, right? And this means के similar, right? It's a mathematical notation. Okay, so I hope it makes sense, right? So आपने एक ग्राफ को एनालाइज कर। Now imagine कि we have a non-uniform graph. ठीक है, by non-uniform what do I mean? If I plot distance and time graph values, ठीक है, let's say मैं values plot कर रहा हूँ। Let's say it was initially 0 meter at 0 seconds, right? Then at the next second it was 10 meters. Let's say not 10 meters. It was let's say around 3 meters. Then at the next second it came out to be 7 meters. Then at the next second, let's say it came out to be around 16 meters, right? So from 0 to 1 second, there was an increment of 3 meters. Then from 3 to 7, there was an increment of 4. And then from 7 to from 2 seconds to 3 seconds, there was an increment of 9, right? So there is a non-uniform increment, right? So that is why this scenario is called of non-constant speed, or you can see it is an example of non-uniform speed. Right? As discussed before, which we had discussed in the last classes, okay, these graphs, if you curve your right hand, so these graphs are called increasing graphs, right? And these graphs are called decreasing graphs. अगर किसी का pattern इस type का है, so they will be called decreasing graphs. I have explained this in detail in the last class. You can revise from the recording, right? Okay, so what is happening over here? If I want to explain to you mathematically कि ये graph increasing graphs क्यों हैं, ठीक है? So let's try to understand that in detail.
So let me just take multiple points. Let me take point A. Let me not take this point A. Let me take, let's say, ABC I have mentioned. This is point alpha. This is point, let's say, if I take this point, this is point beta. And this point is gamma, right? This is alpha. This is equivalent to beta. It's a Greek notation. And this symbol is gamma. अगर आपको याद रखना है कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है? So how would you find a graph of a curve? You draw tangents, right? You draw tangents. ये मैं आपको discuss कर चुके हैं. If you have taken 9 class की मैथ्स भी आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे you draw a tangent like this. Should be a straight line. Let me just redraw it again. Right? So रफ सा tangent बनेगा. इसके ऊपर you will take 2 points. Point number 1, point number 2, and then apply the formula of the slope. That is, the slope is equal to change in y over change in x. Right? And then you will draw a tangent over here at this particular point. Then a tangent over here. Right? Let me name this slope as m1. Let me name this slope as m2. Let me name the slope. इसका जो आंसर आएगा स्लोप का वो m3, right? If you recall from your basic mathematics and the last classes also, if you have multiple scenarios of the graphs, let's say graph ऐसा है, that the graph is like this. It has a slope of m1. It has a slope of m2, right? The steeper the graph, the greater the value of the gradient. मतलब इसकी जो m2 की value होगी would be greater than m1, right? तो यहाँ पे you can see कि what is happening over here. The m1, m2, and m3, right? As soon as you start to go on the right side as the time proceeds, the tangents become sharper, the steeper, right? That is stating that this is an example of increasing graph, right? The slope, its speed is increasing, but at a non-uniform rate, right? So how would you analyze this? Is the speed of the car, let's imagine I'm talking about a car, right? I'm talking about a Maserati, which I have drawn to you guys from multiple classes. Okay, the speed of the car, let's say this was point 2, now let's start with it. Speed of the car is increasing at a non-uniform rate, right? Because slopes की value same नहीं होगी, this would be increasing, right? Or you can say कि the car is accelerating, right? So अब accelerating क्यों हो रहा है, right? अब let me just try to give you summary of whatever we have discussed till now, ठीक है? So that is through sketch. Let me just sketch a graph of displacement time graph. You have distance time graph, let's say, ठीक है? And आपको मैंने ये दिया हुआ है कि जो last example था, it was increasing graph, right? If you want to plot the graph of velocity time graph from distance time graph, sorry, speed time graph, कैसे बनाओगे आप? You will take slopes at different point, right? आप slope इस पे निकालेंगे, point A पे slope निकालेंगे, आप point B पे slope निकालेंगे, आप point C पे slopes निकालेंगे, right? From drawing tangents. So this would give you a straight line, ठीक है? A constant straight line like this, right? आपने क्या करा? You basically found slope. So slope basically gave you the velocity of at different points, and you have found out that this was point A, this was point B, and this was point C, and you have got the answers. And you can see the speed is increasing, right? At different points of time, right? So इस point पे speed was increasing. At this point speed की value ज़्यादा है, ठीक है? From the point A value, इस point पे speed की value ज़्यादा है, right? Now let's say if you want to sketch acceleration against time graph from this, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे आप? That would be done again finding slopes, right? Let me tell you why am I linking with this. Sorry, acceleration time graph. What is speed? Speed is basically change in distance upon change in time, right? And this is equivalent to what? The slope of this graph, right? And how do we find acceleration? It's the change in velocity upon change in time, right? So what is this equivalent to? Is graph again slope, right? And you can see the slope of a straight line is constant.
therefore इसका आंसर इस ग्राफ sketch would be constant value over. So again you found out the slope and you got the acceleration time graph, right? So this is point A, this is point B, and this is point C, right? So if अच्छा एक क्वेश्चन अब पॉप करेगा आपके दिमाग के अंदर कि we can go from distance time graph to speed time graph, then speed time graph to acceleration time graph, but can I go back? If I have this graph, can I sketch the velocity time graph, speed time graph? ठीक है. If I have speed, can I sketch the distance time graph? ठीक है. So how can I do this? अरे यार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे किया? हाँ, तो अगेन स्लोप निकाला लड़के. आपने इस ग्राफ का स्लोप निकाला. आप इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर बेसिक मैथ्स क्लास, let's say this is y-axis, this is x-axis. आपके पास straight line है, and you have multiple points on the straight line. You have point A, you have point B, and you have point B, and you have point C, right? So if you recall from your basic mathematics class, if you use point AB to find the slope, ठीक है, or if you use point BC to find the slope, or if you use point AC to find the slope, you get the same value. Do you agree with this? यस. तो स्लोप्स, इसकी समरी क्या है? इसकी वो समरी क्या है कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, राइट? तो आपका सबसे आंसर कोई एक आंसर आएगा, दैट विल बी सी. सी इज अ कांस्टेंट, राइट? सी. तो सी इज बेसिकली दिस वैल्यू, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की वैल्यू, राइट? हमेशा सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी. तो ये इसकी स्मॉल सी, इसकी लेट्स से दिस कैन बी 9.81 वैल्यू ग्रेविटी, और लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? जो आपको एक्सेलेरेशन ग्रेविटी दी गई, राइट? दिस इज द एंटायर मेथड हाउ टू बी ट्रेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. क्लियर है हम सब? हम सब इट इज क्लियर? यस सर. मतलब आपकी आवाज नहीं है मेरे को, तो जोर से बोले थोड़ा. यस. ओके, यस, ठीक है. अब ना क्वेश्चन आ रहा है इसके, हाउ कैन आई गो बैक, राइट? हाउ कैन आई गो बैक? लेट्स से इफ आई हैव स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है. सो मैं इससे पहले आपको एक डिस्टेंस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सेलरेशन, राइट? तो वो कर लेते हैं. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. So let me insert blank slide and tracing back. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़्यादातर टीचर मिस करते हैं क्लास के अंदर, राइट? और ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये एग्जाम में पूछे आते हैं, पेपर टू में थ्योरी में. ई ग्राफ दिया हुआ है, इससे आप स्केच करें डिस्टेंस एंड ग्राफ, राइट? तो आप उसमें फंस जाते हैं, ठीक है. सो नाउ लेट्स इमेजिन वी हैव दिस ग्राफ गिवन टू अस. मेरी लाइन थोड़ी बट खराब है. वी हैव दिस ग्राफ ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, राइट? एंड दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? कुछ भी वैल्यू सी बोल दो, ठीक है. ये है टाइम वन, कुछ भी वैल्यू सकती है. आई एम जस्ट गिविंग इट वेरिएबल्स. दिस इज T2, दिस इज T3, ठीक है. सो अब मुझे इससे ट्रेस करना है व्हाट आई वांट टू ट्राई बैक टू वेलोसिटी टाइम, राइट? अभी कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ नाउ लेट्स ट्रैक दिस विद द इक्वेशन, राइट? So what is acceleration का formula? It's change in velocity upon change in time, right? I want to find the change in velocity, ठीक है, कि मेरे सब्जेक्ट दिस इज गोइंग टू बी acceleration times the change in time, right? So if you recall, if you just check it out, you have got over here. Let me choose red color. तो T1, ठीक है. तो मुझे ना पहले T1 वैल्यू पे उसकी वैल्यू निकालनी है कि मेरी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. दिस इज योर डेल्टा टी फ्रॉम द स्टार्ट ओरिजिन, ठीक है. एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन की वैल्यू, राइट? सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस, व्हाट डू आई गेट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? डज दैट मेक सेंस? एक दफा वापस एक्सप्लेन कर.
यस, तो मतलब अगर मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट ऑफ t1, so I'm going to only find out by just finding area under this rectangle, right? So अब अगर मैं स्केच करूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, so let me just draw the axis, let me keep the color same ताकि आपको इशू ना हो। सर ने कलर कॉम्बो बंदे इस्तेमाल किए, आप ये ना बोलो। दिस इज स्पीड, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3, राइट? एंड मैंने इससे एरिया, गो बैक टू द लास्ट स्लाइड, इससे मैंने एरिया निकाल लिया एंड लेट्स से दिस एरिया वाज कमिंग आउट टू बी v1, राइट? सो एरिया वन में इसको बोल रहा हूँ, एरिया वन है, ठीक है। लेट मी जस्ट चूज रेड कलर ताकि आपको प्रॉब्लम हो। सर मैं एक चीज पूछ लूं, जी पूछें। ये जो ए के आगे एरो है, इसकी हम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? ए के आगे एरो है कहाँ पे? ये जीरो के लेफ्ट पे, ये बोल रहे हो? ये वाला एरो और उससे दूसरा वाला एरो भी। मैं बस बोल रहा हूँ कि इमेजिन कि आपके पास अगर रेक्टेंगल है एक, ठीक है, उसकी ब्रेथ होती है, उसकी हाइट होती है, राइट? हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ब्रेथ इनटू हाइट, राइट? तो मैंने इस साइड को बोल दिया दिस साइड इज डेल्टा टी, दिस साइड इज ए, सो हाउ वुड यू फाइंड द एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल? इट्स हाइट टाइम्स ब्रेथ, राइट? हाइट यहाँ पे ए है, ब्रेथ यहाँ पे डेल्टा टी है, राइट? सो इट्स ए टाइम्स डेल्टा टी, डेल्टा टी वन बोल लो उसको, ठीक है। सो एरिया वन इज बेसिकली गिव यू अ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वन, उसको मैंने वेरिएबल बोल दिया, ठीक है। सो ये आपने पॉइंट करना है प्लॉट, ठीक है। लेट्स से ये आ गया v1 आपका, दिस गिव यू कांस्टेंट वैल्यू, तो दिस ओरिजिन आपके पास तो जीरो, राइट? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बिकॉज एट द स्टार्ट इट वुड बी जीरो, राइट? सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ t1 दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस वैल्यू, राइट? आपको दो पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिल चुका है, राइट? आपको बस एरिया अब t2 पे निकालनी है वैल्यू आपको, और t3 पे निकालनी है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, एंड दिस वुड बी इन मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली, राइट? Now you want to find till t2, right? यहाँ तक, let me just choose this color. What is the value of velocity at t2? So for that you have another triangle, another rectangle, which is basically this yellow region, right? अब आपके पास you have another rectangle for finding the velocity, the speed, the velocity of the car that was this. Let's say this was the car we're talking about, ठीक है? तो अब आपको t2 पे निकालनी इसकी स्पीड कितनी थी, राइट? So now you have another triangle which is the following. Let me just erase this. Now your breadth is changing, right? So आपकी जब breadth rectangle की, now it's delta t2, right? So this, let me name this entire thing as area 2, right? So what is area 2? Again, it's another triangle with breadth of delta t2 and height of a, right? How would you find the area under this curve? That is again a times delta t2, and this would give you again a constant value. आपका एक constant answer आएगा, number आएगा, that is going to be your velocity, ठीक है? And again now you will go to your graph, you will plot it out over here like this, ठीक है? It's coming out to be v2, ठीक है? Let's say this is your v2. Okay, so now you have enough points to plot the graph, right? तो आपके पास पॉइंट अच्छे खासे आ चुके हैं, so you can find out t3 also. t3 के लिए क्या करेंगे आप? You will again make another rectangle, ठीक है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible, Ishal and other? जी सर, अब आ रही है आवाज। ठीक है, ओके। सो नाउ आई हैव अनदर रेक्टेंगल, ठीक है। अब आई एम गोइंग टू चूज अनदर highlighter. Let me choose orange one. So now I have this entire rectangle over here, ठीक है। So अब मेरा जो breadth है, the rectangle यहाँ बन रहा है, उसकी जो breadth है that is going to be now b delta t, ठीक है। So अब मैं इसको नाम दूंगा इस rectangle को, जो orange वाला rectangle है, that is going to be this. This is going to be area 3, right? It has the breadth of delta t3 and a height of a. So what is my area 3 coming out to be? It's height times base, right? So this is coming out to be, this is going to give me again a constant value, एक number आएगा, that is going to be again a velocity 3, right? So ये आपकी value आ जाएगी यहाँ पे velocity 3.
You can see कि it's coming out to be a straight line, ठीक है. And if I sketch this is going to be a straight line. ठीक है, माने कि it's a straight line. मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ इस वैल्यू को. Let me just fix it out. This is V1, right? So this is how you sketch from acceleration to, okay, this is a straight line, ठीक है. This is a straight line. मेरी sketching में थोड़ा सा tilt हो गया. So you know that if you're given a graph of acceleration time graph, that's how you can trace back and create what, this velocity time graph. Okay. So again, if I give you a summary, of the process, क्या करा हम लोगों ने कि you're given this graph of acceleration time graph, right? This was a constant. तो आपने क्या करा, आपने एट डिफरेंट पॉइंट्स आपने इसकी एरिया निकाले. आपने T1 पे एरिया निकाला, T2 पे एरिया निकाला, T3 पे आपने एरिया निकाला. This was the value of plus A, and you got the graph of velocity time graph, which is coming out to be a straight line, right? And this is T1, and this is T2, and this is T3, right? Now I'm going to give you a homework. Okay, your homework is going to be the following, right? So you want to read this slide. ठीक है. And आपका process जो मैं यहाँ पे बताया मैंने आपको बता दिया. ठीक है. You want to basically read this. So homework is, you want to read this slide and complete the question in the next slide, right? Question in next slide. ठीक है. अब वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि do we have enough time? We have 3 minutes, right? So now the question is, sketch the displacement time graph from the following velocity time graph. ठीक है. अब you know the process, you can watch the recording again and again to understand the idea कैसे करेंगे. So the question is, आपको मैंने ये दिया हुआ है ग्राफ of velocity time graph. ठीक है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है इन द लास्ट स्लाइड. ठीक है, it's a straight line. So we are given this graph which is, let me just choose red color. आपको ये ग्राफ मैंने दिया हुआ है. So this is T1, this is T2, and this is T3, right? And at this value you have the value V1. Let me just name this as T1. थोड़ा आगे पीछे हो गया है. This is T1, ठीक है जी. And this is going to be T2, and ये थोड़ा बहुत दूर हो गया. Let me choose this as T3, and this is your T3, right? And this is the value of V3, right? And I'm going to give you one hint so that you can not be stuck over it for the entire night. The hint is, if you have a triangle like this, and this is the base and this is the height, the area of the triangle is going to be half into base into height, right? So you want to solve this before tomorrow's class, inshallah. This is a pretty simple graph, right? इसके अलावा मुश्किल नहीं हो बताता. सर एक मुझे बताइएगा कि अगर हम लोग वो ढूंढ रहे हो, क्या कहते हैं, जो जिस सवाल में आप बता रहे थे, आप जरा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्टटर हो रही है ना? हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है ना सवाल में. इस सवाल में व्हाट शेप डू यू सी? ये विच शेप? पे स्लाइड नंबर 35 पे जो है. हाँ, 35, 38 की बोल रहे हो? 5. 35. हाँ, इसमें हमने जो शेप हमें मिल रहा था, दैट वाज द रेक्टेंगल, राइट? सो वी अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. मेक सेंस? सो यू जस्ट, व्हाट इज द ट्रिक? जी जी. व्हाट इज द ट्रिक? बेसिकली ट्रिक ये है, इफ यू वांट टू बैक ट्रैक, यू वांट टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, सो एरिया अंडर द ग्राफ
is going to give you the speed time graph. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब let me just give you a hint also, hint number 2, के note area under velocity time graph will give you displacement time graph, राइट। अब मैं इससे ज़्यादा बताया तो मैं आपको हिंट दिया ये वाला और ये वाला हिंट दिया है। कैन आस्क मोर क्वेश्चंस इन द ग्रुप। यू आल्सो हैव अ टीचर असिस्टेंट, टीए मैंने हायर किया हुआ है आप लोगों के लिए। जो भी क्वेरीज आपकी अगेन, सो आई वाज सेइंग कि जो भी क्वेरीज आपकी होंगी आप पोस्ट कर दीजिएगा। यू हैव योर टीए एंड आल्सो मी। आई गेस दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। अच्छा जी, लेट्स सर प्रोसीड। ये जो एस